everyone, welcome to my YouTube channel. I'm your spiritual guide Himani. So another week is started. Let's see what universe is guiding you during the week. It's the week for 2nd to 8th of November. These are the guidances as per your moon sign. In case you are not aware of your moon sign, आप ये रीडिंग एनी जोडियक साइन जो आप कनेक्टेड हैं उससे ये रीडिंग देख सकते हैं, चाहे वो सन साइन हो, मून साइन हो, जोडियक, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर रेजोनेट्स विथ इट, आप ये रीडिंग्स देख सकते हैं. हैव फेथ एंड मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स डीपली. तो आप ज़रूर इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करेंगे. आई नो इट्स अ जनरल रीडिंग बट स्टिल हैव फेथ एंड डेफिनेटली यू विल रेजोनेट विद दीज गाइडेंसेस. आई विल पुट डाउन टाइम स्टैम्प ऑफ ऑल द जोडियक साइन, तो आप अपना जोडियक के अकॉर्डिंग रीडिंग देख सकते हैं. ऑल्सो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे. आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल से, मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज से. एनीथिंग यू वांट टू नो, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशंस नए वीडियोस के मेरे चैनल से मिलते रहेंगे. ऑल्सो आप ये वीडियो शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि वो भी रेजोनेट कर सके इन रीडिंग्स के साथ. तो चलिए, without wasting any time, let's start the video. So first zodiac sign है मेष राशि, एरीज. let's see the guidance. okay, so एरीज आपके लिए जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ गैब्रियल. सो ये एंजल्स गाइडेंसेस हैं. सो चलिए देखते हैं एस ऑफ गैब्रियल एरीज आपको क्या बोल रहे हैं. सो आपको हो सकता है नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. मेक यूज़ ऑफ इट एंड इट इज़ द टाइम टू डू समथिंग अमेजिंग, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर. और आपका कोई पैशन है, आपकी कोई ड्रीम्स हैं, आप किसी से इंस्पायर्ड है और आपको कुछ करना है. डू समथिंग अमेजिंग विच विल which will make you happy, which will people appreciate. It will be a wonder opportunity. So do something amazing which has inspired you, which is making you motivating, passionate about it. So it's all about fulfilling your dreams. So all the best Aries. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक पे चलते हैं, दैट इज़ टॉरस. देखते हैं वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से. ओके, सो फॉर टॉरस वी हैव द कार्ड 2 ऑफ गैब्रियल विच मीन्स मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस. तो इस समय मुझे ऐसा लगता है आप कंफ्यूज्ड हैं या आपको ऐसा लगता है क्या करें क्या नहीं करें. सो इट्स द टाइम टू मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस. सो जो आप चाहते हैं इट विल मेक यू सक्सेसफुल, इट विल मेक यू happy. That bold and ambitious choices you have to do. Be practical. Great progress is possible. So it's the week where progress is possible, so make use of it. Also important relationships with people who share your vision. So you might come across people who have the same opinion, who have the same vision. So partner with them and have an ambitious and bold choice. So you will come across with people who share the same vision, who help you to fulfill your dreams, and you both together will have a joyful and successful endeavor. And so make use of it. All the best Taurus. So चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जेमिनाई. लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है. लेट मी ओपन द कार्ड फॉर जेमिनाई. ओके, सो जेमिनाई आपके लिए कार्ड आया है द व्हील विच मीन्स आपका जो भी चैलेंज, जेमिनाई आपके जो भी चैलेंजेस थे लास्ट वीक वो सब कुछ हट जाएंगे. इट्स द टाइम फॉर न्यू बिगनिंग. सो जो भी डिलेज थे, इट्स द टाइम फॉर एंड ऑफ डिलेज, a change in direction that will offer happiness. So there will be a change of direction in your life that will offer happiness and prosperity.
इन योर लाइफ. सो इट्स अ साइकिल, व्हील ऑफ फॉर्चून. सो आपके जो भी प्रॉब्लम्स थी लास्ट वीक, डिलेज थे, काम नहीं बन रहा था, वो सब इस वीक हट जाएगा एंड यू विल फील हैप्पी, यू विल फील सक्सेसफुल. देर विल बी न्यू बिगनिंग्स. अगर आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं, कार या हाउस, दिस इज़ द राइट वीक फॉर यू टू बाय समथिंग न्यू. ऑल द बेस्ट जेमिनाई. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं, दैट इज़ कैंसर. चलिए देखते हैं कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है. कर्क राशि, लेट्स सी द गाइडेंस. ओके, सो कैंसेरियंस, आपके लिए कार्ड है सॉल्यूशंस, विच मीन्स सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज. समटाइम्स हमें किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हम चाहते हैं, हो सकता है यूनिवर्स सोचता हो वो हमारे लिए नहीं है. तो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज सो दैट वी अचीव सक्सेस इन लाइफ. सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस इज द ओनली की दिस वीक फॉर यू कैंसर to be successful in your life. So you have to have self control on things which might taking time or which is not meant for you. So you have to have patience. Things will move as per universe choice. Definitely success will be there, but have patience. Forgiving and healing energy, मुझे healing energy नज़र आ रही है. अगर आप थोड़े challenges में हैं, problems में हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है, सो हीलिंग एनर्जी दिख रही है. डेफिनेटली स्लोली एंड स्लोली यू विल हील विद टाइम. फॉर गिव वॉट इज द key for you this week, Cancer. Whosoever has troubled you and whosoever had heartbreak you, so it is the time to forgive and get the healing energy around. All the best, Cancer. चलिए नेक्स्ट जोडिएक पे चलते हैं, दैट इज लियो, सिंह राशि. लेट्स सी द गाइडेंस फॉर लियो. ओके, लियो, आपके लिए कार्ड आया है पीस, विच मीन्स रिलीज द पास्ट. सो जो भी पास्ट में आपके प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है, डोंट होल्ड ऑन द पास्ट, बिकॉज पास्ट अगर आप होल्ड करोगे तो आप फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ पाओगे. There is a more enriching future is coming, more opportunities around the corner, so you have to release the past and move on to see new and enriching opportunities for the future. Let go and let God, means let go and God will take care of yourself. So you have to let go of past, release the past and see fulfilling opportunities around the corner, Leo, and I hope that will lead to happiness and prosperity. So don't hold on the past. Key is release the past and move on. All the best, Leo. Let us move ahead and check the guidance for Virgo, Kanya Rashi. Let's see आपके लिए क्या guidance universe दे रहे. Okay, for Virgo, we have the card the Emperor, which means there is stability and efficiency. If you are looking out for a job, rest assured this time you will get stability and efficiency in the new opportunity which you will get. Take charge of situation. So you have the capability to take charge of your situation and work towards it. Definitely you will get stability and efficiency. If you are in your current job, don't worry, you will get stability, you will get leadership roles in your current company itself. Make use of it. Universe knows what you need, so be ambitious and make ambitious plans. So this is the right week for you to make ambitious plans and take charge of your situation, Virgo. All the best. चलिए नेक्स्ट जोडिएक लिब्रा पे चलते हैं. लेट्स सी द गाइडेंस फॉर लिब्रा. व्हाट इज स्टोर्ड फॉर लिब्रा. ओके, सो लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ मिचेल, विच मीन्स this week you are very strong and committed towards your goals. You are very logical and intellectual. It's a time to move quickly towards your goals. You will be choosing logic over emotion, so you will be taking decisions more logically through mind rather than through heart and emotions. There will be
sudden changes in your life, you are running towards your goals, but make sure you will take quick decisions but not impulsively. Think before taking any action. All the best. All the best, Libra. So now let us move ahead and check the guidance for Scorpio. Let's see what is the guidance. Okay, Scorpio, for you the card is strength. So strength and grace through kindness. So be self confident, things will move. Have inner courage, inner peace to move, and to move towards your goals and fight towards challenges. So you should have strength and grace through kindness. You should be kind, you should have inner strength and grace to fight all the challenges in life. Forgive those who have hurt you, and have that self confidence and courage that you can achieve success in life. So all the best, Scorpio. Let us move ahead with the next zodiac sign, Sagittarius. Let's see the guidance for Sagittarians. Okay, Sagittarians, for you the card is Nine of Mitchell, which means your worry is unnecessary. I feel you are worrying too much of the situations and circumstances which is not yet occurred, but your mind is working 10 times. Focus on your thoughts, ऑन द आउटकम यू डिज़ायर. तो जो आपको आउटकम चाहिए उसके बारे में सोचो, ना कि जो अभी तक हुआ नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यू माइट लीड टू ट्रबल्स. नो, अच्छा आउटकम सोचो जो आपको चाहिए, रैदर देन जो आप सोच रहे हो वो हो जाएगा, बिकॉज योर माइंड इज वर्किंग 10 टाइम्स. रिलीज फीलिंग ऑफ रिग्रेट, गिल्ट और वरी टू योर एंजल्स. एंजल्स के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो. मैनिफेस्ट पॉजिटिव थॉट्स, your desires, what you are looking for, rather than you are worrying too much, which is unnecessary. This is causing you anxiety, sleepless nights, insomnia, so which is not required. Focus on thoughts which you want, the outcome which you desire. Manifest that. Rest, leave it to universe. Definitely you will achieve what you want. All the best, Sagittarians. Let's move on to Capricorn, Makar Rashi. Let's see the guidance. Okay, so Capricorns, your guidance is Queen of Michelle, which means brilliant, self reliant, imagine, insightful. So you are insightful, self reliant, brilliant. You know exactly what to do. So you know what you want to do, what goals you want to achieve, how you want to achieve. You are focused towards your goals. You have that benefit of experience. You are an experienced person and you know what you want to do and how you want to do. So you are leading your team accordingly. So this is the time for your career rather than your relationships. If you are single, focus on your career. It is the time to focus on your career. Be independent and then thought about relationship. This is not the time for relationships. This is the time to grow in your career. This is the time to be ambitious, logical. You think through mind rather than through heart. So focus accordingly. All the best, Capricorn. Let us move ahead with Aquarius, Kumbh Rashi. Let's see the guidance. Okay. So for Aquarius, the card is the world, which means a happy ending. So whatever projects you were working, it is about to get over and you will receive appreciation and praise from your superiors. You might get reward in the form of promotion, salary hike. So one circle is about to get over and you are ready to face new challenges, new project. You will have spiritual growth and insight. So you are ready to face new goals, new challenges. If you are a student, you will complete your graduation and you are ready for getting job in the market, or you are single, you are ready to get married. So one cycle is over and you are ready for new
cycle new challenges. All the best, Aquarius. Now let us move on to the last zodiac, Pisces. Let's see the guidance. Okay, so Pisces, for you the card is 5 of Mikkel, which means this situation doesn't serve you. So this is the situation which you are currently facing is not what you desire. It is not going to help you in anything. So just be silent. Don't, because there might be difference of opinion, so don't go towards that, because this situation will not serve you anything. It will only break relationships. So it is the time to stay grounded. Release your attachment to the outcome. So जो भी outcome है उससे attachment निकाल दो. Go with the flow. More uplifting approach you have to take, rather than with the same approach and breaking the relationships. It is the time to be silent. Consider more uplifting approach. If you are facing disagreements, difference of opinion with your superiors, so it's the time to use more uplifting approach currently. And remove all the attachments from the outcome, then you will face the result. All the best, Pisces. Thank you so much, everyone. I hope this week will bring happiness and joy in your life. Let's meet next week. Till then, take care. Bye bye. Have a great week ahead. Cheers.